So, in our last video, we learned front end क्या होता है and what technology you can use to build your front end. Now, in order to build your backend, what is your backend? Backend जो है, it is the server side part of your application which is responsible for managing your data, clients, performance, blah blah blah. Okay, definition है. अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो क्या what will it mean? See, you'll have users, you'll have to store those users somewhere. You need authentication, right? लॉगिन करवाना पड़ेगा यूजर से ताकि तुम्हें पता चले कि कौन लॉगिन कर रहा है, उसके पास कितने क्रेडिट्स है ताकि वो तुम्हारा सर्विस यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तुम्हारा एप्लीकेशन का लॉजिक, लेट्स से इफ यू आर बिल्डिंग दैट ट्विटर थिंग, उसका तुम लॉजिक तुम्हारे फ्रंट एंड में तो नहीं डाल सकते बिकॉज इट हैज टू बी केप्ट विथ यू, राइट? इट शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू द यूजर। यूजर सिर्फ अपना डेटा भेजेगा या फिर वो ट्वीट का आईडी भेजेगा। यू विल गो टू ट्विटर और however it will be implemented, you'll get the data, convert it into an image and maybe send this image to the user, right? The application logic, security of your application, all these things constitute the backend. Now, जैसे तुम्हारे फ्रंट एंड बिल्ड करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, सिमिलरली तुम्हारा बैकएंड बिल्ड करने के लिए भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। सो व्हाट टेक्नोलॉजी शुड यू यूज? तो पहले कौन कौन से अवेलेबल है, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इफ यू आर यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, लेट्स मेक इट एज जावा स्क्रिप्ट। नाउ अगर तुम पाइथन यूज कर रहे हो तो Django एंड फ्लास्क नाम के दो फ्रेमवर्क्स है। Django is considered as batteries included because it provides you all the majority of the codes which is required for your working. Flask जो है थोड़ा लाइट वेट है, ठीक है? Python तुम यूज कर सकते हो। Node.js as it's told, like Node.js तुम यूज कर सकते हो रन टाइम में, एंड Express जो है एक फ्रेमवर्क है जो तुम्हें हेल्प करता है इन ऑर्डर टू यूज इट, ठीक है? एंड जावा कम्स विद स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट भी एक फ्रेमवर्क है जो तुम्हें जावा में बैकएंड लिखने में हेल्प करता है। सो तो तुम्हें अपना बैकएंड बिल्ड करने के लिए which technology would you or should you use? Okay, see, if you are familiar with any of these frameworks, you have worked with it, you are comfortable with it, then you can go with any of the frameworks you want, okay? Because most of the frameworks are very popular and are highly used. But अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हें कहाँ से शुरू करना है, कैसे बिल्ड करना है, you don't know how things work, I would suggest go with Node.js Express के साथ. Why? Because one, you don't need to learn a new language. तुम्हें ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट पता है या तुम सीख रहे हो because you're building your front end. Since you know JavaScript, the concept of JavaScript gets carried on here as well. तो तुम्हें एक नया लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है. Second, डेवलपमेंट का स्पीड विल बी फास्टर, राइट? Third, compared to other frameworks, especially Java and Spring Boot, Java लैंग्वेज खुद ही में बहुत वर्बोस है एंड हाईली बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है. कंपेयर टू जावा, Node.js is easier. Even compared to Python, Node.js is comparatively actually easier. ठीक है? तो let's make a very simple API endpoint and let's see how we can call the API endpoint. ठीक है? So let's get started. तो हम खोलेंगे अपना टर्मिनल. ओके, अभी भी रन हो रहा है क्या? इसको बंद करते हैं. ओके, लेट्स सी. ये जो फ्रंट एंड बेसिक्स है, कैन क्लोज दिस, वी डोंट नीड दिस फॉर नाउ. नाउ दिस इज योर वाइट प्रोजेक्ट जो था, ये भी हम क्लोज करते हैं. लेट्स ओपन द टर्मिनल. लेट्स गो बैक. Factory. I already have a backend करके है, but I'll show you how to create a new one. ठीक है? Let me. So ये हमारा प्रोजेक्ट है. How do you initiate a node project? That is npm init -y. If you give default values SSS लेगा. If I don't give y, it'll ask me everything like
पैकेज का नाम यस रखो, ओके वर्जन 1, डिस्क्रिप्शन यस, एंट्री पॉइंट यस 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 यस, have to click all these. Okay, it has been created. लो VS कोड, हमारे पास पैकेट डॉट जेसन है जिसके अंदर लाइक नो लाइब्रेरीज हैव बीन इंस्टॉल्ड. इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू विल हैव टू इंस्टॉल एक्सप्रेस. नाउ आई नो आई हैव टू इंस्टॉल एक्सप्रेस. देयर आर चांसेस you might need libraries जिसके बारे में तुम्हें पता ना हो. Just come to Google, let's type npm express. टाइप तुम्हारा जो लाइब्रेरी होगा ये तुम्हारा npm है. इट विल गिव यू इंस्टॉलेशन का. यू क्लिक ऑन इट, इट विल कॉपी द कमांड, यू कैन पेस्ट इन द टर्मिनल. सेकंड थिंग, जब भी तुम कोई पैकेज डाउनलोड कर रहे हो, मेक श्योर इट हैज अ प्रीटी बिग ह्यूज नंबर हियर, बिकॉज अगर नंबर बहुत कम है, if people are not actively contributing to this, because most of these things are open source, so if people are not contributing to these things and your weekly downloads बहुत कम है, there are chances either the package might be deprecated, या फिर there might be some issues, या फिर पुराना कोड या vulnerabilities, या फिर unknown कोई like bad things, right? So make sure you use famous packages. ठीक है, so just come back here and paste it and install. Okay, so if you go to your packet.json, it should have been installed. Right, dependency में हमारे पास express है. Now I want express का, let's create a file x.js. I'm gonna create, give you let me just add the code, let me just paste it. 1 second. So the code I copy pasted from ChatGPT. ठीक है. So what is this code doing? ये कोड बोल हमने अपना एक्सप्रेस का इंपोर्ट किया, वी क्रिएटेड अ न्यू इंस्टेंस ऑफ इट. ये हमारा राउट है. ठीक है, ये एक गेट रिक्वेस्ट है. अगर मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट बना रहा हूं, ऐप डॉट पोस्ट, हमारा पाथ क्या होगा? लेट्स कॉल इट टेस्ट, टेस्ट एज अ पोस्ट का पाथ. रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट on send the post request. Now how do we start the server? We use node. Yes, ये हमारा रन हो रहा है. ठीक है, सो देखो ये तुमने कॉपी किया तुम्हारा यूआरएल, तुम जाके यहाँ पे पेस्ट करोगे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आया हेलो एक्सप्रेस. ओके, मेक सेंस. व्हाट हैपेंस इफ आई पेस्ट दिस थिंग दैट इज स्लैश टेस्ट? इट कैनॉट गेट टेस्ट बिकॉज तुम्हारा जो टेस्ट है वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, ना कि गेट रिक्वेस्ट. दैट्स द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू टू इंस्टॉल पोस्टमैन. कैनॉट इंस्टॉल यहाँ पे ना. सो हु इज मिस्टर पोस्टमैन? पोस्टमैन जो है तुम्हें get, post, put, patch, delete all the different post all the different REST APIs को hit करने देता है. So I can send a get request, I can select post and send a post request called test. बहुत simple चीज है. Like going further, you'll have to test your APIs जो कि protected होंगे. They'll use some form of authentication, maybe cookies हो गया या sessions हो गया. That's where you can add headers. तुम अपना header add कर सकते हो यहाँ पे, whatever is required. You can add authorizations. You can save whatever you do. Right? यहाँ पे कौन सा किस तरह का authentication तुम use कर रहे हो, तुम add करके add कर सकते हो. तुम्हारा जो भी request होगा यहाँ पे save होंगे. You can write scripts as well. ठीक है? So this is where you'll end up using Postman. So this is a very basic introduction to backend. We'll speak more about backend, libraries, all that stuff, connecting to your database or some. We'll look at in the upcoming videos.